Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is reading comprehension asked in the SBI Clerk examinations. आने वाले वर्ष 2025 में SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके प्रिपरेशन में हमें लग जाना चाहिए। इस रीडिंग कंप्रिहेंशन में एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके कंटेक्स्ट में दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। पैसेज आपका है, रिसेंटली ए स्टडी वॉज मेड ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ TV programs and viewers' perception about their quality. The study of attitudes towards prime-time TV programs showed that programs with identical ratings in terms of numbers of people watching received highly divergent marks for quality from their viewers. This additional piece of information could prove valuable for advertisers who might be well advised to spend their advertising money for programs that views feel of high quality. Question number 1. Which of the following is most nearly the same in meaning as the word feel as used in the passage? Students, passage में certain words को underline किया गया है, उनमें से एक word feel पर question number 1 based है। आपको दिए गए 5 options में से इसका synonym select करना है। तो feel का मतलब क्या होता है? To experience, to perceive. Now let us examine the options to find out its synonym. Number A, pour means to put some liquid into another pot. Dhalna, udelna. This is not the meaning of the word feel which is underlined in the passage. Hence number A is eliminated. Number B, sympathize, to have sympathy for. किसी के लिए सहानुभूति रखना. This is also not the meaning. Hence eliminated. Perceive, yes, to notice, to realize through sense organs. To understand something in a particular way with the help of sense organs. Hence this is the correct answer. So mark it as your answer. Evolve, to develop. Number E, sensitize, to make sensitive. These two are thus easily eliminated. The right answer to question number 1, which of the following is most nearly the same in meaning as the word feel as used in the passage, is number C, perceive. Now let us come to question number 2 based on the given passage. Which of the following is most nearly opposite, यानी एंटोनिम की बात हो रही है, in meaning of the word divergent which is underlined in the passage as used in the passage. Students, divergent means different, consisting of different things or persons. अब इसका अपोजिट होना चाहिए सिमिलर। ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए, पॉइंटेड मीन्स डायरेक्टेड, उस ओर इशारा किया हुआ। पॉइंटेड का दूसरा अर्थ भी होगा नॉट ब्लंट, बट दिस इज नॉट द this is not the antonym of the word divergent, which means different. Hence eliminated. Similar is the correct antonym. Divergent means different, similar means not different. Hence this is the correct answer.
नंबर सी, हेट्रोजीनस का मतलब होगा डाइवर्जेंट, डिफरेंट, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स और पर्सन्स। दिस इज एलिमिनेटेड क्योंकि ये सिनोनिमस जा रहा है, सिनोनिमस होगा नहीं इसका। नंबर ई, फोकस्ड मीन्स पेड अटेंशन टू, जिस पर आपका ध्यान केंद्रित रहता है। दिस इज ऑल्सो नॉट द मीनिंग that we require as an antonym to the word divergent. The right answer is thus number B, similar. You must have a good word power, otherwise you will not be able to give answers to such questions. Question number 3, which of the following inferences can best be drawn from the passage? Option A, the numbers of viewers decided the quality of the programs. आप देखें पैसेज के लाइंस में ऐसी चर्चा नहीं है। Recently a study was made on the popularity of TV programs and viewers' perception about their quality. The study of attitudes towards prime time TV programs showed that programs with identical ratings in terms of numbers of people watching received highly divergent marks. So number A is easily eliminated. Number B, the viewer's perception about the quality of programs is significant for the advertisers. केवल यही नहीं है, पैसेज के शुरू के पार्ट में देखिए, recently a study was made on the popularity of TV programs and viewers' perception. दोनों popularity of TV programs and viewers' perception. So number B is also eliminated. Number C, the poor quality programs have very few viewers. ऐसा कोई इन्फ्रेंस पैसेज में नहीं है, कहीं भी पुअर क्वालिटी प्रोग्राम्स की चर्चा नहीं की गई है। नंबर सी, नंबर डी, एडवर्टाइजर्स कैन डेराइव बेनिफिट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट व्यूअर्स परसेप्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स। चर्चा है स्पष्टतः शुरू से लेकर अंत तक ही चर्चा किया गया और लास्ट में कंक्लूजन देखिए इसका। From their viewers, this additional piece of information could prove valuable for advertisers who might be well advised to spend their advertising money for programs that viewers feel are of high quality. So right answer is thus number D. Number E, none of these is easily eliminated. Your answer is option number D. Advertisers can derive benefit from the information about viewers' perception of quality of programs. Let's come to question number 4. Which of the following is or are the finding or findings of the study? आपके 3 फाइंडिंग्स यहाँ दिए गए हैं, A, B, C. The viewers decide, फर्स्ट को हम लोग एग्जामिन करें। The viewers decide the prime time TV programs, ऐसी चर्चा नहीं, ये फाइंडिंग नहीं है, क्योंकि आपका फर्स्ट लाइन्स में देखिए, फर्स्ट फ्यू लाइन्स में देखिए, रिसेंटली a study was made on the popularity of TV programs and viewers perception about their quality. यानी viewers determining agents नहीं है। सो नंबर ए इज एलिमिनेटेड, ये फाइंडिंग नहीं होगा। नंबर बी है द एटीट्यूड्स ऑफ व्यूअर्स कैनॉट बी रिलायबली असेस्ड। कोर्स देखिए यहाँ पर कैनॉट बी रिलायबली, ये इन्फरेंस हो सकता है बट ये फाइंडिंग नहीं है, क्योंकि आपका पैसेज कहता है अबाउट देयर क्वालिटी द स्टडी ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइम टाइम टीवी प्रोग्राम्स शोड दैट प्रोग्राम्स विथ आइडेंटिकल रेटिंग्स in terms of numbers of people watching received highly divergent marks for quality from their viewers. So B भी आपका eliminated हो गया। नंबर C है the advertisers were benefited from good quality programs। ये भी फाइंडिंग गलत जा रहा है, क्योंकि दिस एडिशनल पैसेज का लास्ट फ्यू लाइन्स देखिए, This additional piece of information could prove valuable for advertisers. ऐसा नहीं कि benefit हुआ, who might be well advised to spend their advertising money for programs that viewers feel are of high quality. So this is also eliminated. Hence your answer is number 5, none of these, क्योंकि इनमें से कोई भी finding सही नहीं बैठ रहा है। So number 1,
2, 3 and 4 are eliminated. The answer will be, ये कहाँ है आंसर? नन ऑफ दीज है, तो कौन आंसर होगा? यस, मैं अंडरलाइन करके बताता हूं, जहां पर राइटर ऑथर कह रहा है प्रोग्राम्स विथ आइडेंटिकल ratings in terms of numbers of people watching received highly divergent marks for quality from their viewers. ये फाइंडिंग आपका क्लियरली दिखाई पड़ रहा है पैसेज में. प्रोग्राम्स विद आइडेंटिकल रेटिंग्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल वॉचिंग रिसीव्ड हाईली डाइवर्जेंट मार्क्स फॉर क्वालिटी फ्रॉम देयर व्यूअर्स will be the right answer to question number 4. Let us come to the last question, question number 5. Which of the following can be inferred from the passage? अब inference को पकड़ना है. 3 inferences are given, A, B, C. Let us examine each of them. Number A, advertisement can have some effect on the viewers' buying habits. कभी कहीं पर भी पैसेज में रिसेंटली a study was made ... towards prime time TV programs showed that programs with identical ratings in terms of numbers ... for quality from their viewers. कहीं भी viewers के buying habits की चर्चा नहीं की गई है. So number A is not applicable, eliminated. नंबर बी को देखते हैं तो मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग विथ हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स यील्ड्स मोर प्रॉफिट्स. यस, आपके पैसेज के लास्ट में देखिए चर्चा है who might be well advised to spend their money advertising money for programs that viewers feel are of high quality. This is the correct inference. अब नंबर सी को भी देखते हैं, चूंकि ऑप्शन में एक से ज्यादा भी इन्फ्लुएंस आ रहा है. सी है आपका डिफरेंट प्रोग्राम्स विद इक्वल नंबर ऑफ व्यूअर्स कैन बी रेटेड डिफरेंटली एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न. यस, अंडरलाइन जो मैंने किया है पिछले क्वेश्चन के जवाब में. Programs with identical ratings in terms of numbers of people watching received highly divergent marks for quality from their viewers. This is also the correct inference. Hence, the right answer will be B and C. अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये प्राप्त होता है. ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए, नो, एलिमिनेटेड. हमें बी और सी मिल रहा है. बी को देखिए, ओनली बी, ये भी एलिमिनेटेड. C, only A is eliminated, so this is not applicable, so remove it. Number D, only B and C, this is the correct answer. Number E, none of these is eliminated. The right answer is thus number D, only B and C. इस तरह से स्टूडेंट्स आप पैसेज के कंटेक्स्ट को ध्यान से समझें, क्वेश्चंस को आप देखें, ऑप्शंस को देखें और तब रैंडमली पैसेज में जाएं. यदि पैसेज बड़ा हो छोटा हो तो आप बार बार भी पढ़ सकते हैं. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.